हम ज्यादा क्या खाते हैं? तमरेज, आप ज्यादा पकोड़े समोसे ही खाते हैं. सो जी. यू नो, सो द फोकस शुड बी ईटिंग द राइट फूड्स. जिस तरह से अगर we're thinking about the starchy carbs, we're thinking about the complex carbs, so we're thinking about whole meal, whole grain. So rather than having, you know, इफ्तार में फ्राइड चीजें खा रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं करते कि जो कि हमारा रोजमर्रा का बिफोर रमजान द मील्स व्हिच वी वर हैविंग, हम वैसे ही खाना खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, या कोई अगर मीट का कोई डिश बना है, but that way you will आपका you will not be hungry, but you will not be eating high sugary, high fat foods as well. Saying that, I don't want you to, you know, सबका दिल करता है कि इफ्तार पे दे, you know, कुछ चटपटा खाएं. Everyone feels like having something different, something nice. So you can think of dividing your iftar into 2 courses. जी. 2 कोर्स में आप करें. पहले कोर्स में यू लाइट सी इफ्तार करें, खजूर से हम अपना रोजा खोलते हैं. यू कैन हैव फ्रूट चाट, यू कैन हैव समथिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खा सकते हैं, जैसे चना चाट हम खाते हैं या लोबिया चाट खाते हैं. सो वी नो कि उसमें टेस्ट होता है, बट देयर इज नो ऑयल इन इट. जी जी. सो द चॉइस ऑफ फूड्स विल मेक अ डिफरेंस. तो वो थोड़ा सा लाइट सा किया. इफ यू रियली वांट टू हैव समोसेस एंड पकौड़ेस, द फर्स्ट थिंग इज थिंकिंग अबाउट द अमाउंट. आर यू हैविंग 5 samosas or are you having 1 samosa? Are you having 10 pakode or are you having 2 pakode? So that's the very important thing to think of. But on top of that, preparation techniques will also make a difference. जैसे from the past 3 years I've been baking my samosas. मुझे भूल गया है कि fried samosas कैसे Baking samosas. हाँ Oh, हाँ. that's interesting. कैसे बेक करते हैं? कैसे बेक करते हैं? मैं तो खैर I get the packeted frozen samosas. I don't make them on my own. जी. लेकिन बस समोसा लिया, I brush oil on them. अच्छा. I stick them in the oven and 20 to 25 minutes में 150 degrees में वो हो जाते हैं, and they're quite crispy. But one thing I'll warn everyone, that the color is not the same, and sometimes it gives you the feeling that they're not cooked, but they are cooked, they're crispy, but they won't look like the fried versions. तो कहती हैं कि टेस्ट उनकी सेम ही होती है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ट्राई नहीं की इनको. The thing is, there is a little bit of a compromise you have to make. ठीक है? It can never taste the same, but you have to train your taste buds. ठीक है? And it's the decision you have to make कि whether मुझे खैर है, कोई परवाह नहीं है, मैं समोसे खाऊं, I don't care, my cholesterol goes up, I don't care, my weight goes up. On the other hand, you say that okay, I want to look after my body, और साथ साथ फिर आप खाने का भी दिल कर रहा है, तो भूख लगी होती है. हाँ, तो इट्स एब्सोल्युटली, मैं हमेशा ये एडवाइस देती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ आप पे कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट. Well, of course, हम सभी सेहतमंद रहना चाहते हैं. और you know, that's one first thing really comes to mind, and then of course दिल में खुशी होनी चाहिए. और you know, if you are सेहतमंद, then you know want to look good as well. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात.